डियर गुडियंस अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स को सोशल स्टडीज़ के पहले चैप्टर मुस्लिम इन्वेजन इन द सब कॉन्टिनेंट पार्ट 1 का जो है वो रीडिंग करवाऊंगा और पेज वाइज इसकी आपको कुछ इसके आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप चैप्टर को आसानी से समझ सकें। ये सोशल स्टडीज़ सोशल स्टडी ग्रेड 8 का पहला चैप्टर है, मुस्लिम इन्वेजन इन द सब कॉन्टिनेंट पार्ट 1। आइए सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। First invasion from Muslims in the subcontinent took place in 711 AD. A ship was taking the Muslim women and children from Sri Lanka to Iraq. While passing through the waters of Sindh, they were attacked by pirates. Women and children were taken prisoners. Hajjaj bin Yusuf, then governor of Baghdad, asked ruler of Sindh to look into the matter and recover the people aboard the ship. The ruler of Sindh took no action. Hajjaj bin Yusuf sent army to Sindh through Balochistan. The commander of this army was Imaduddin Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim was born on 31 December 695 AD. He was only 16 years old when he was sent to conquer Sindh. The army which departed from Shiraz in 710 AD was 6,000 Syrian cavalry and detachments of non-Arabs from Iraq. At the borders of Sindh, he was joined by an advance guard and 6,000 camel riders. Later, the reinforcement from governor of Makran were transferred directly to Debal, part of Sindh, by sea along with 5 catapults. Muhammad bin Qasim fought with Jats and captured the land on the west of the Indus River. Later, he crossed the Indus and fought forces of Raja Dahir. He was able to take control as far as Multan. Later, he went back and there was not much advancement for about 300 years. बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम सोशल स्टडीज़ में तारीख का हिस्सा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है BC, AD। हमारे इन चैप्टर्स में BC तो नहीं आएगा क्योंकि ये उसके बाद की तारीख है, लेकिन AD का जो है वो बार बार जिक्र होगा। यानी जैसे शुरू में है 711 AD। ये 780 जो है लैटिन वर्ड है एमो डोमिनी। ये उसका मुखफ़फ़ है AD का, जिसका मतलब है कि हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद का एरा जो वक्त है ये उसको जो है वो पॉइंट आउट करता है। जैसे BC बिफोर क्रिस्ट यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले का जो वक्त है उसको वो हम से उसका मतलब लेते हैं। जैसे इस्लामी तारीख में जो जैसे हमारा आजकल साल चल रहा है 1441 जो है वो हिजरी, 1441 हिजरी से मुराद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी उस वक्त से हम हमारा जो इस्लामी कैलेंडर बना है, तो उनकी हिजरत के बाद का जो वक्त है उसको हम हिजरी सन गिनते, यानी आजकल हमारा सन 1441 चल रहा है शवाल। तो ये बार बार जो साल का जिक्र होगा तो उसमें AD भी लिखा होगा, जिसका मतलब होगा एमो डोमिनी, यानी ये लैटिन लफ्ज़ है, इसका मतलब है हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद का वक्त। अब हम इस पेज की जो है वो थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि बरसगी पाको हिंद में मुसलमानों ने पहला हमला 1711 AD में किया। मुसलमान औरतों और बच्चों को एक बहरी जहाज श्रीलंका से इराक लेकर जा रहा था, लेकिन जब वो सिंध के करीब समंदरों में पहुंचा तो इस पर बहरी कज़ाकों ने हमला कर दिया और बच्चों और औरतों को गिरफ्तार कर लिया, जरगमाल बना लिया। उस वक्त के बगदाद के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के हाकिम को इस मसले को हल करने के लिए कहा, लेकिन सिंध के हाकिम ने इस बात पर कोई ख़ास तवज्जो न दी। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने बलूचिस्तान के रास्ते अपनी आर्मी यहाँ पे भिजवाई
اور اس کو لیڈ کر رہے تھے 16 سالہ سپہ سالار عماد الدین محمد بن قاسم. محمد بن قاسم نے جٹکوں کو شکست دی، سندھ کی مغرب جانب علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن بعد ازاں محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا اور اگلے 300 سال تک یہاں پہ مزید کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد غزنوی کا دور شروع ہوتا ہے. آئیے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. Subukhtagin of Ghazni deserves a footnote in the history as he was the first Muslim to enter the subcontinent through the Khyber Pass. After his death, his son Mahmud Ghaznavi took over his father's position as a ruler in 997 AD. The peace of northern Pakistan was shattered when he launched the first of 17 expeditions into the subcontinent in 1001. He took land towards east as far as Lahore and south as far as Multan. His most famous expedition was the sacking of Somnath. Sultan Mahmud Ghaznavi died in 1030 AD. Ghaznavi dynasty, however, was able to survive 150 years. The last three Ghaznavid kings made Lahore their capital, and Lahore was to become a sanctuary for the last Ghaznavid king, Khusro Malik. Then Ghoris. Ghoris کا جو دوری حکومت ہے وہ غزنویز کے بعد آتا ہے. The most serious of the many threats to Khusro Malik was Muhammad of Ghor. He managed to capture the fortress of Ghazni. Muhammad Ghori, as he was commonly known, entered Pakistan in 1175 AD. He destroyed the Ghaznavid garrison in Peshawar. Later, he captured Multan, Sindh, and Lahore in 1175, 1182, and 1186 respectively. Muhammad Ghori then became the first Muslim conqueror to cross the rivers of Punjab and fought Hindus for Delhi. He captured all the northern subcontinent except Kashmir. Muhammad Ghori moved southwards to the famous Hindu center of Banaras. He was also successful in his campaign against heavily fortified territory of Gwalior and Ajmer in Rajasthan. He appointed Qutbuddin Aibak the governor of Lahore and Delhi before returning to Ghazni. Muhammad Ghori was defeated by the Turkish army in 1205 AD, and rumors were rife that he had been killed. These stories encouraged Hindu hawkers to rise in rebellion. At the end of 1205, combined forces of Muhammad Ghori and Qutbuddin Aibak defeated Hindu hawkers. On his way back to Afghanistan, Muhammad Ghori was assassinated. آئیے ہم اس پیج کا آپ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. سبکتگین آف غزنوی پہلا مسلمان تھا جو خیبر کے راستے بر صغیر میں داخل ہوا. سبکتگین کی وفات کے بعد اس کے بیٹے محمود غزنوی نے 997 AD میں حکومت سنبھالی اور 1001 AD میں محمود غزنوی نے برصغیر پر اپنے حملوں کا آغاز کیا، جو 17 حملے مشہور ہیں محمود غزنوی کے. محمود غزنوی نے ملتان اور لاہور پر بھی قبضہ کیا، سومنات پر بھی حملہ کیا. جو محمود غزنوی نے جو 17 حملے مختلف ادوار میں برصغیر میں کیے، اس میں سب سے زیادہ مشہور حملہ اس کا سومنات کے مندر پہ تھا. محمود غزنوی کی وفات کے بعد ان کے جو غزنوی خاندان کی 150 سال تک حکومت ادوار میں رہی، لیکن اس کے بعد خسرو ملک جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئے. غزنوی بادشاہت کے آخری بادشاہ خسرو ملک کو اپنی بادشاہت کے دوران سب سے زیادہ خطرہ غور کے جنگجو محمد غوری سے تھا. محمد غوری 1175 AD میں پاکستان میں داخل ہوا اور پشاور میں غزنی مملکت کی چھاؤنی کو تباہ کر دیا. بعد ازاں محمد غوری نے ملتان، سندھ اور لاہور پر بھی مختلف ادوار میں قبضہ کیا.
محمد غوری نے کشمیر کے علاوہ تمام جنوبی برصغیر پر قبضہ کر لیا. بہت سے علاقوں کو ختم کرنے کے بعد یا ان پہ حملہ کرنے کے بعد محمد غوری نے غزنی جاتے ہوئے قطب الدین ایبک کو لاہور اور دہلی کا گورنر مقرر کر دیا. 1205 اے ڈی میں ترکی آرمی نے محمد غوری کو جو شکست دی، اور اس افراتفری میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ محمد غوری جنگ میں مارا گیا ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندو کھوکرز نے سر اٹھایا اور بغاوت کر دی. محمد غوری اور قطب الدین ایبک نے ایک مشترکہ فورس تیار کی اور ہندو کھوکرز کو شکست دی. افغانستان یہ حکومت جو ہے وہ قطب الدین ایبک کے سپرد کرنے کے بعد جب محمد غوری افغانستان واپس جا رہا تھا تو راستے میں اس کو قتل کر دیا گیا. سلیو ڈیناسٹی فرسٹ دہلی سلطنت. At the time of his death, Muhammad Ghori has appointed 4 governors in Ghazni, Multan, Lahore and Bihar. Qutbuddin Aibak had the support of others and became the ruler of the land. Governor of Ghazni, however, opposed him but was defeated by Qutbuddin Aibak army in 1208 AD. Qutbuddin Aibak became the Sultan of the land, with Delhi as his capital. In 1210, Qutbuddin Aibak died as a result of falling of his polo pony. He was succeeded by his son-in-law Shamsuddin Iltutmish or Iltutmish, who was challenged by other Ghori rulers. It was not until 1229, after defeating all of them, that Iltutmish became the Sultan of Delhi. In 1226 AD, the Khilji ruler of Bihar, Ali Mardan Khan, declared himself independent of the Sultanate. Iltutmish defeated the Khilji army and extended his rule to even larger area that was controlled by Qutbuddin Aibak. Iltutmish was succeeded by his nominated successor, his daughter Razia Sultana, in 1236 AD. Almost all the provinces stood against her. She fought them bravely, but she was murdered in 1240. Behram, half-brother of Razia Sultana, was placed on the throne by the 40 palace guards known as the 40. He was also murdered in 1242 AD by the 40, and Alauddin Masood, grandson of Iltutmish, was placed on the throne by the 40. He was suffered the same fate as his previous predecessors through the hands of 40. Nasiruddin Mahmud was followed by the uncle Alauddin Masood. Nasiruddin Mahmud survived for 20 years till 1266 AD, but the real power lied with Balban, the leader of the 40. Balban became more powerful when he gave his daughter's hand in marriage to Nasiruddin Mahmud. Balban died in 1285 AD at the age of 80, and the rule of the slave dynasty ended as the Khilji rose from the army ranks to take charge. جیسا کہ پہلے صفحوں میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ محمد غوری قطبالدین ایبک کو ملتان، لاہور، دہلی اور بہار کا گورنر بنایا گیا تھا، اور یعنی 2 جگہوں کا گورنر بنایا تھا، باقی علاقوں کا بھی گورنر وہ نامینیٹ کر دیے گئے. محمد بن غوری کے قتل ہونے کے بعد قطب الدین ایبک کو نیا حاکم بنانے کی تائید کی، سب نے کی، لیکن غزنی کے گورنر نے اس کی مخالفت کی.
قطب الدین ایبک نے 2008 میں غزنی کے گورنر کو شکست دی اور حاکم دلی بنا، تاہم 1210 میں پولو کھیلتے ہوئے اپنے خچر سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کے داماد شمس الدین التمش، انگلش میں ہم التتمش پڑھتے ہیں لیکن اردو میں التمش پڑھتے ہیں، نے اقتدار سنبھالا۔ اس کے دور حکومت میں بھی کئی لوگوں نے سازشیں کی، سازشوں کا سر اٹھایا، لیکن شمس الدین التمش نے سب کو شکست دی۔ 1236 میں التمش نے اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، جس کی تمام صوبوں کے گورنروں نے بڑی سخت مخالفت کی۔ رضیہ سلطانہ نے بھی دشمنوں کا خوب مقابلہ کیا، لیکن 1240 میں رضیہ سلطانہ کو قتل کر دیا گیا اور اس کے دربار میں موجود 40 درباریوں، یہ درباری تھے 40 جو اصل میں حکمران تھے اس دور میں، یہ جو دور حکومت تھا ان کا خاندان غلامہ کا۔ اس کے بعد یہ جو 40 درباری تھے انہوں نے رضیہ سلطانہ کو قتل کرنے کے بعد اس کے ستیلے بھائی بہرام کو نیا حاکم مقرر کر دیا، اسے بھی 1242 میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آنے والے کئی حاکموں کے ساتھ ایسا ہی ہوا، آئے اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ علاؤدین مسعود جو سلطان التمش کا نواسہ تھا کے قتل کے بعد اس کے بھانجے نصیر الدین محمود کو حاکم بنا دیا گیا۔ نصیر الدین محمود نے 20 سال تک حکومت کی، جس کی اصل طاقت وہ 40 کا گروہ تھا، 40 جو سپاہی تھے، درباری تھے، جس کا اصل سربراہ غیاث الدین بلبن تھا۔ 1885 میں 80 سال کی عمر میں بلبن کا انتقال ہو گیا، اور بلبن کے انتقال کے ساتھ ہی خاندان غلامہ کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد دور حکومت شروع ہوتا ہے خلجیز کا۔ جلال الدین فیروز خلجی used his position as the head of the Balban army to become the ruler of the Sultanate. He officially took control in 1290. He was already 70 years old when he became a ruler. He survived only 6 years as the Sultan. He was murdered by his nephew Alauddin Khilji. Alauddin later defeated Jalaluddin's son and became the first Muslim ruler of the central and southern subcontinent. His cruelty was thus legendary towards his enemies and the people under his rule. He applied heavy taxes and price control on products to control inflation. Shopkeepers received lashes for overpricing if somebody weighted less as compared to the price he charged. The deficient weight was completed from his flesh. The 20-year reign of Alauddin ended with his death in 1316. After his death, Malik Kafur, his slave general, tried to take over the Sultanate. He even blinded the two sons of Alauddin Khilji. The third son, Mubarak, was able to forestall his fate by having Malik Kafur killed. Mubarak then became the Sultan, the only ruler for 4 years from 1316 to 1320. In 1320, Khusro Khan, a Hindu, converted to Islam and favorite courtier of Mubarak, had him murdered. In Khusro Khan's period of rule, mosques were destroyed as well as copies of the Holy Quran. An army was raised under the leadership of Ghazi Khan in Punjab against him. This army defeated Khusro Khan and he was beheaded for the crimes he committed against Islam. As no legitimate successor to Khilji was found, Ghazi Khan was persuaded
to become Sultan, Ghazi Khan took the title of Ghiyasuddin Tughlaq Shah on 8 September 1320. अब इसकी हम थोड़ी सी ट्रांसलेशन कर लेते हैं और इसको आपको ट्रांसलेशन यानी इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं इस पेज पे खिलजीज़ और खिलजीज़ ख़ानदान के बारे में क्या बताया गया कि बलबन आर्मी के सरबराह जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने 1290 AD में हुकूमत संभाली। सिर्फ 6 साल के बाद जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कत्ल कर दिया। बरेल सगीर के मरकज़ी और जनूबी हिस्से पर हुकूमत करने वाले पहले मुसलमान बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान बहुत सारे नए टैक्सेस लगाए और अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सख्त तरीन कवानीन तरतीब दिए ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। कम तोलने वाले का वज़न इसके जिस्म के गोश्त को काट कर पूरा किया जाता था और किसी किस्म की करप्शन करने वाले को लैशेस यानी कोड़े भी लगाए जाते थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल हुकूमत की। अलाउद्दीन खिलजी की वफ़ात के बाद इसके ग़ुलाम मलिक काफूर ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया और इस मकसद के हसूल के लिए यानी इक़्तिदार को हासिल करने के लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी के 2 बेटों को अंधा करवा दिया, उनकी आंखें ज़ाया करवा दी, बिनाई ख़त्म करवा दी। ताहम अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक ने मलिक काफूर को कत्ल करवा दिया। मुबारक ने सिर्फ 4 साल हुकूमत की और इसके बाद हरदिल अजीज़ दरबारी खुसरो खान ने उसको कत्ल किया जो एक नौमौलूद मुसलमान था। खुसरो खान ने अपने इक़्तिदार के दौरान मसाजिद और कुरान पाक के नुस्खों को तबाह किया। नौजुबिल्लाह गाजी खान नामी सिपहसालार ने खुसरो खान को शिकस्त दी और इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करने और इससे नुकसान पहुँचाने के जुर्म में इसका सर कलम कर दिया गया। गाजी खान ने इसके बाद लक़ब इख्तियार किया ग़ियासुद्दीन तुगलक का और 1220 AD में उसने सल्तनत की बागडोर संभाली। द तुगलक्स। Ghazi Khan was a gentle soul. He took care of the people and forgave the close associates of Khusro Malik. He ruled for only 5 years as he was killed along with his son. A victory pavilion erected by the other son, Juna Khan, collapsed on them. Juna Khan, or Muhammad Tughlaq as his new royal title, was very brutal. He was considered monster for killing his father and brother. He raised taxes on agricultural land. He even experimented with the taxes already in effect. He even shifted the capital from Delhi to Deogri, which proved to be a fatal mistake. Later, he returned the capital to Delhi. In 1322 to 1329 AD, Mughals converted Mongols swept through Multan and Lahore. The Sultan was forced to pay large sum of money to Mughals for not attacking Delhi. Muhammad Tughlaq was killed in 1351 while fighting a rebellion in Sindh. His nominated successor, Firoz Khan, became Sultan after a lot of persuasion. Firoz Khan was a gentle soul, unlike Muhammad Tughlaq. He even forgave his sister for plotting against him. She wanted to kill Firoz Khan and had her son become Sultan. Firoz Khan did not expand his land but defend with great success. Firoz Khan ruled the Sultanate for 37 years from 1351 till 1388 AD. He died at the age of 80. Soon afterwards, every state declared their independence. There were new states in Sindh and Kashmir, independent from the capital.
There were 6 Tughlaq successors to Firoz, whose periods as Sultan ranged from 5 months to 13 years. The rule of Tughlaq completely finished in 1412 with the invasion of Taimur. Ghazi Khan al-Maruf गयासुद्दीन तुगलक एक नरम दिल हुक्मरान था. गाजी खान ने सिर्फ 5 साल हुकूमत की और बाद इसके बेटे गाजी खान के बेटे मोहम्मद तुगलक ने इसको और इसके एक बेटे को कत्ल कर दिया. जोना खान अल-मारूफ मोहम्मद तुगलक एक जालिम हुक्मरान साबित हुआ और लोग उससे बहुत खौफजदा थे कि इसने इतना जालिम हुक्मरान है कि इसने अपने हुक्मरानी हासिल करने के लिए अपने वालिद और अपने भाई को भी कत्ल करवा दिया. मोहम्मद तुगलक ने ज़राअत पर बहुत से नए टैक्सेस लगा दिए और जबकि पहले से लगे हुए टैक्सेस को भी उसने छेड़ा और उनमें भी रद्दोबदल करने की कोशिश की. अलावा जी मोहम्मद तुगलक ने अपने दारुलहुकूमत को दिल्ली से भी शिफ्ट किया और यह तजर्बा से बहुत गरां गुजरा. बहुत उसको इस सिलसिले में नाकामी का सामना करना पड़ा और इसी कैपिटल की शिफ्टिंग के दौरान मुग़लों ने जो मैंगोज थे, जो कन्वर्टेड थे मुग़ल में, मुल्तान और लाहौर में तो सफाया कर दिया. जबकि मोहम्मद तुगलक ने मुग़लों को दिल्ली पर हमला न करने के एवज भारी रकम अदा की. 1351 AD में मोहम्मद तुगलक एक जंग के दौरान मारा गया और बड़ी कोशिश के बाद मोहम्मद तुगलक के जानशीन फिरोज़ खान ने सल्तनत के अमूर को संभाला. रहमदिल होने के सबब फिरोज़ खान ने अपने खिलाफ होने वाली साजिशों की जड़ अपनी बहन को भी माफ़ कर दिया. फिरोज़ खान ने 37 साल दौरे हुकूमत के दौरान अपनी सल्तनत में कोई खातिर खा इजाफा ना किया, लेकिन अपनी मौजूद सल्तनत जो उसके पास सल्तनत मौजूद थी उसका खूब दिफा किया और उसकी खूब रखवाली की. मोहम्मद तुगलक की वफ़ात के बाद 24 साल तक तुगलक ख़ानदान की हिंदुस्तान पर हुकूमत रही, बरसगीर पर हुकूमत रही और इस हुकूमत का ख़ात्मा तैमूर के बरसगीर पर हमले के बाद तुगलक ख़ानदान का ख़ात्मा हो गया. Taimur invaded through northwest frontier into the subcontinent in 1398. He was known to the west as the Tamerlane, Taimur the Lame. His base was in Samarkand in modern Uzbekistan. He had already overrun Persia, Afghanistan, and large parts of Middle East. Taimur entered subcontinent and destroyed major cities on the way. He captured Delhi and had entire Hindu population killed. Although the lives of the Muslims were spared, properties were not. Taimur left a nominee, Khizr Khan, to rule in his name in 1414. Khizr Khan styled himself as a Sayyid and proclaimed to be ruling in the name of Taimur. Sayyid dynasty has had 3 successors from 1414 to 1451 AD for 37 years. The line of Sayyid dynasty was Shah Alam. The last in the line of Sayyid dynasty was Shah Alam. He was happy to retire in peace, conferring his authority
to rule to Behlul Khan Lodi. Behlul Khan Lodi was the first Pathan Sultan of Delhi. He became the ruler in the worst possible time, with nobles declaring themselves independent within the few miles of Delhi. All that Behlul Lodi could claim as his territory was the area from Lahore to Dipalpur and few areas near Delhi. He was able to recover Mewar, Sindh, and Sindh Doab. When he died in 1488, he was succeeded by his third son, known as Sikandar Shah. Sikandar ruled from 1488 till 1517 AD. In 1517 AD, Lodi became the ruler of the land. Daulat Khan Lodi was the governor of Lahore and the son of the cousin of Behlul Lodi. He was against Ibrahim Lodi and invited Babur to join him in fight against Ibrahim Lodi. The time was so desperate for Ibrahim Lodi that he did not even notice the Portuguese were establishing foothold near Bombay. In 1526, after the Battle of Panipat, Babur defeated and killed Ibrahim Lodi. His brother tried to restore the Lodi dynasty, but it was fruitless. Babur was the new Sultan of Delhi. तैमूर ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की जानिब से 1398 में बरसगीर पर हमला किया। तैमूर टैमरलैन या तैमूर द लेम के नाम से जाना जाता है। बरसगीर हमला करने से कबल तैमूर ईरान, अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता के बहुत से इलाकों पर पहले ही कब्जा कर चुका था। बरसगीर में जब वो दाखिल हुआ तो उसने रास्ते में आने वाले बहुत से शहरों को तबाह कर दिया। उसके बाद उसने दिल्ली पर भी कब्जा किया और तमाम हिंदुओं को कत्ल करवा दिया। ताहम मुसलमानों की जानों की तो बख्शिश कर दी, लेकिन उनकी जायदादों पर कब्जा कर लिया। तैमूर खान समरकंद वापस चला गया और अपनी जगह खिजर खान को इन इलाकों पे हुकूमत करने के लिए नॉमिनेट कर गया। बाद अज़ां बेलोल खान लोदी ने हिंदुस्तान में इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। बेलोल खान लोदी ने 1488 तक हुकूमत की। उसके बाद सिकंदर शाह ने हिंदुस्तान में 29 साल तक हुकूमत की। सिकंदर शाह की हुकूमत के बाद इब्राहिम लोदी ने दिल्ली का इक़्तिदार संभाला। बेलोल खान लोदी की हुकूमत के बाद जब इब्राहिम लोदी ने हुकूमत संभाली तो दौलत खान, जो कि लाहौर का गवर्नर था, वो इब्राहिम लोदी के सख्त खिलाफ था। उसने अपनी मुखालफत को मद्देनज़र रखते हुए बाबर को, मुग़लों के बादशाह बाबर को दावत दी कि वो उसके साथ मिलकर इस पे इब्राहिम लोदी की हुकूमत में हमला करे। 1526 AD में पानीपत के मकाम पर दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई और इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई और वो इस जंग में मारा गया। उसके बाद उसके भाई ने बहुत कोशिश की कि हुकूमत को, जो लोदी दौरे हुकूमत है, जो सल्तनत है, उसको संभाला जा सके, लेकिन वो ऐसा ना कर सका और उसके बाद दिल्ली की सल्तनत पर बाबर का कब्ज़ा हो गया, जो मुग़लों का पहला बादशाह था। प्यारे बच्चों, ये आखिरी
सफ़ा था आपके पहले चैप्टर मुस्लिम इन्वेजन इन सब कॉन्टिनेंट का। मुझे उम्मीद है कि आपने जितना मैंने आपको रीडिंग करवाई और इसको ब्रीफ किया, आप उसको समझ गए होंगे। इस चैप्टर की जो आखिर में एक्सरसाइज है, सॉल्व्ड एक्सरसाइज, आपको ऑलरेडी आपके हैंड ओवर कर दी गई है। वो सॉल्व है, आप उसे दोबारा सॉल्व करें। जो आपको वीडियो के थ्रू लेक्चर दिया गया है उसको गौर से सुनें, ख़ुद भी रीडिंग करें। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमारे स्कूल में हमसे दोबारा रब्ता कर सकते हैं, हम आपको दोबारा समझा देंगे। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।